हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ड्रग डोज कैलकुलेशन टफ लगता है? डोंट वरी। आज की वीडियो में हम ड्रग डोज कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। बेसिक फार्मूलाज, वेट बेस्ड कैलकुलेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड मच मोर, स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक फार्मूला। तो इसको बेसिक फार्मूला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फार्मूला मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो अमाउंट टू बी गिवन मींस पेशेंट को कितना अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है, उसको हम लोग अमाउंट टू बी गिवन कहते हैं, जिसको कि एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय डोज इन हैंड इनटू क्वांटिटी। मतलब कितना डोज ऑर्डर किया गया है डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना डोज है, दैट इज डोज इन हैंड इनटू क्वांटिटी। किस क्वांटिटी में हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। सो दैट इज एक्स इक्वल्स टू डोज डिवाइडेड बाय डोज इन हैंड इनटू क्वांटिटी। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूला को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, द डॉक्टर ऑर्डर्स अ डोज ऑफ 100 mg टू बी गिवन ओरली। You have 25 mg tablets. So how many tablets should you give? तो हमारे पास क्या गिवन है, तो डोज गिवन है 100 mg और हमारे पास डोज इन हैंड है 25 mg पर टैबलेट मीन्स क्वांटिटी इज 1। सो हम बस बेसिक फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, दैट इज एक्स इक्वल्स टू डोज that is given, that is 100 divided by dose in hand, that is 25 to quantity is 1. So after solving, we will get 4 tablets. So we need to administer 4 tablets to the patient. अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वेट। तो अगर वेट प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में, वेट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो हम उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग डिजायर्ड डोज फाइंड आउट करेंगे। डिजायर्ड डोज के लिए हमें जो वेट क्वेश्चंस में प्रोवाइड किया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे डोज ऑर्डर्ड, और यहाँ से हमारा जो डोज निकल कर आएगा उसे हम यूज करेंगे अगेन इन बेसिक फॉर्मूला, इट इज अमाउंट टू बी गिवन इक्वल्स टू डोज डिवाइडेड बाय डोज इन हैंड इनटू क्वांटिटी। तो आइए हम वेट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट वेज 60 kg मीन्स पेशेंट का वेट प्रोवाइड किया गया है। Then the prescribed dose of gentamicin is 5 mg per kg per day. Means dose ordered given है 5 mg per kg per day. Then the dose in hand is also given here 80 mg per 2 ml. Means quantity is 2 ml here. So how many ml of gentamicin should be administered per day? So we need to find out the amount to be given to the patient. So for that, as we learn, step one is we need to find out required dose. For that, we need to multiply weight into dose ordered. That is, weight is 60 kg into dose ordered is 5 mg. So here dose is 300. Then step 2, simply we will use the basic formula, that is amount to be given equals to dose divided by dose in hand into quantity. So dose we got 300, then dose in hand is 80 mg, then quantity is 2 ml. Then after solving this,
that is 7.5 ml per day. So amount to be given is 7.5 ml per day. I hope you all are clear with this question. So the third formula is calculation of IV, that is intravenous drip rate. मीन्स हम देखेंगे कि आईवी फ्लूइड हम किस फ्लो रेट से एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स को. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्लो रेट इक्वल्स टू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर. तो ड्रॉप फैक्टर हमारे क्वेश्चंस में गिवन होता है and the unit of drop factor is drops per ml, that is written as GTTS per ml. Now we will solve a question related to IV flow rate. So the question is calculate the IV flow rate for 250 ml of 0.5% dextrose to be administered over 180 minutes. The infusion set has drop factor of 30 drops per ml. So drop factor is given here, that is 30 drops per ml, and the volume is 250 ml, and the time is also given, that is 180 minutes. So simply we will put the values in the formula. So flow rate equals to volume divided by time into drop factor. So volume is 250 divided by time is 180 into drop factor is 30. After solving this, of 41.6. So हम इसे राउंड फिगर करेंगे तो ये 42 ड्रॉप्स पर ml होगा. 42 ड्रॉप्स per minute. So we need to administer 42 drops in 1 minute. So flow rate of IV fluid is 42 drops per minute as per the question. I hope you understand. So the next formula is calculation of flow rate for an infusion pump. तो अब हम देखेंगे कि infusion pump के लिए हमारा क्या flow rate का फॉर्मूला है. तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हम बस वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय टाइम इन आवर. आपको ध्यान रखना है कि फ्लो रेट इन आईवी सेट उसके लिए हमें टाइम मिनट में लेना होता था और इन्फ्यूजन पंप के लिए हमें टाइम आवर में लेना है, क्योंकि ये जैसा हम जानते हैं कि इन्फ्यूजन पंप बहुत ही स्लो जाता है, तो इसीलिए हम इसका टाइम आवर में लेंगे. तो इसका बहुत ही इजी फॉर्मूला है फ्लो रेट इक्वल्स टू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय टाइम इन आवर. तो इसे भी हम एक क्वेश्चन के हेल्प से देख लेते हैं. तो क्वेश्चन इज 1200 D5 इज IV is ordered to infuse in 10 hours by infusion pump. So calculate the flow rate in ml per hour. So flow rate का फॉर्मूला है volume in ml divided by time in hour. So volume is given here 1200 and time is 10 hours simply. So 120 ml per hour. Thank you so much for watching this video. I hope drug dose calculation अब आपको काफी easy लग रहा होगा. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Conceptify Medics for more nursing and medical content. See you in the next video. Till then, keep learning. Thank you.